Okay, so now what we have seen till now is we have seen what is say simple DDL, like we saw how to create a database, then we saw how to create table, right? Then what we saw is we saw how to insert data into the table using insert statement, right? Then what we saw is simple select statement, right? What we also saw is a drop table statement. What does drop table do? It will delete that table, right? Then we saw how to insert rows into a table using insert statement. Then we saw how to update the data using update statement. Then we saw how to delete the rows using delete statement. Then we saw how to fetch the data from the table using select statement. Then we saw how to use a where clause so as to filter the data, right, which we have got, right? So let us say that I am having a very simple query. I am saying select star from contactsdb.contacts. Contactsdb is just the name of the database, right? If you do not wish to use this, if you wish to say only select star from contacts, then you need to use contactsdb prior to this, right? That is also something that you need to keep in mind. Now let us say that we have many students here, we have many contacts here, and these contacts, they are from either from Maharashtra state or from MP state, right? So if I want all the contacts which are only from Maharashtra, so I'll say select star from this where state equals to, in single quotes I'll say MH. I'll select this and I'll run it. I'll get only those contacts which are from Maharashtra, right? And if I run this again, select star from contacts, what I get is I get all the contacts. So this is how we use the where clause, right? Now let us say that if I want all these contacts, or if I wish to fetch all these contacts in ascending order of their names, so what I'll do, I'll say select star from contacts. I'll use another clause which is order by. So I'll say order by name and I'll say ascending. Ascending we write ASC. ASC is for ascending. I select this and I run it. So as you can see, you'll get the names in their ascending order. A पहले आया and G सबसे आखिरी में आया. If I want to get the names in descending order, I'll say order by name DSC. DSC means descending order, right? So then Gandhar comes first and Atish comes last, right? Now let us say that so what it means is this order by clause, it is used to fetch the data in either ascending order or descending order of some column. So in this case, name is a column, right? Then let us say that if I want only the people from Maharashtra or the contacts from Maharashtra to be displayed in ascending order, so I can combine my where clause and order by clause. Let us say, for example, I would say where state equals to, in single quotes, MH, order by name descending, right? So I'll get only the students or the contacts from Maharashtra, right, and in descending order of their names, right? I can also have them by, instead of name, descending order of their email, right? तो ये email से descending order में आ गया. Ascending order किया तो it will change. Right, now these things, such kind of queries, they come a lot into picture, right? जैसे जैसे आप ये करते हो, जैसे जैसे आप SQL पढ़ना शुरू करते हो और आपका एप्लीकेशन धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, वैसे वैसे ये पिक्चर में आते हैं, राइट? देन लेट अस से इफ आई वांट, ये मेरे पास सिलेक्ट
star from contacts db मैंने किया है. Now let us say if I wish to get the count of कितने contacts मेरे पास है, right? So I can simply say select count star from contacts. सी तो इसने एरर दिया. इसने क्या बोला, टेबल स्टूडेंट्स db1 डॉट कॉन्टैक्ट्स डज नॉट एग्जिस्ट. द रीज़न बीइंग कि बाय डिफ़ॉल्ट इसने जो स्कीमा लिया है वो स्टूडेंट्स db1 लिया है. सो व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू से यूज कॉन्टैक्ट्स db. So this will ensure that I am using contacts db. Now if I run it, what I get is 8. यहाँ पर 10 क्यों है, 1 2 3 ओके 4 and 5 नहीं है इसीलिए, राइट. सो दैट इज ऑल्सो फाइन. सो सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स विल फेच मी काउंट ऑफ द रिकॉर्ड्स, राइट. नाउ यहाँ मैंने जैसा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स db वगैरह वगैरह किया है, राइट. तो ये मुझे 4 रोज रिटर्न कर रहा है. कौन सा, स्टेट mh स्टेट वाले. सो इफ आई यूज अ काउंट स्टार हियर, दिस विल फेच मी 4, राइट. वाई, बिकॉज ये काउंट जो है, काउंट हमें क्या देता है, रोज रिटर्न कर, नंबर ऑफ रोज रिटर्न करता है. अभी तक हम लोग जो ले रहे थे दे वर ऑल द रोज, राइट. नाउ यानी ऑल द डेटा फ्रॉम द रोज. नाउ व्हाट वी आर टेकिंग इज द नंबर ऑफ रोज, राइट. सो आई विल रिमूव दिस. Yes. So next thing to learn is that we have a select star from contacts db dot contacts where state is equal to mh order by email ascending. ये मैंने एक सिंपल एक क्वेरी लिखा हुआ है. अब इसमें मुझे स्टार की वजह से क्या होता है कि जो भी कॉलम्स है हर कॉलम मुझे मिल रहा है. Now let us say I do not want all the columns. I want only name, email and mobile, right? So how can I do that? Instead of star, I'll give select name, comma email, comma mobile. And if I run this, so I will fetch only those columns. Is it clear? Yes, it is pretty simple, right? There is nothing complex in it, right? काफ़ी आसान है. Now next thing is that let me open this Excel. Okay, now let us say that if we have a students table, and inside students table, right, we have few columns. One is say serial number, then we have name and we have email, right. ये तीन अपने पास say columns है, right. And we have an address table, right. Address में what we have is again columns are serial number, right. Then we have city and we have state, right. And we have another column is primary. इस primary का मतलब क्या है? It can be true or it can be false. If it is true, मतलब क्या कि it is the primary address of the student. ये उसका मतलब है, right. Now can one student have multiple address? No. Why one student cannot have multiple address? One can be local address and one can be permanent address. Yes, right. One student can have multiple address. One can be local address, one can be a permanent address, right. Now let us say that if I have a student, yeah, instead of serial number I will give ID here. ID is because
ID will be primary key going forward, right? So I say this is one, name is ABC, and email is something a@b.com. ID is 2, name is DEF, and email is b@b.com. Right, now in case of address, I have an address in which I say ID is 1, city is Nagpur, and state is MH, and is primary, I say yes or true. Right, then I have another ID 2, it is say Amravati, state is again MH, is primary, false. Then I have ID 3 which says Bhopal, state is MP, right, is primary, true. Right, and I have ID 4 which says Indore, which is again in MP, and I say is primary, false. Then I have another address 5, right, which says some other city, Riva, it is in MP, is primary, true, or is primary, again false. Right, so one person or one student can have more than one addresses, right, ये पक्की बात है. Now let us say that student ABC, right, I am giving the student ABC a color yellow, and student DEF I will give a color, some other color, maybe green. Right, now let us say that this student ABC has these two addresses, right, Nagpur and Amravati. So what I will do is I will make these two again yellow, right, and these three, they are addresses of student DEF. So because of the color, can you identify that which student has which addresses? Currently we are using colors to identify. Yes, राइट, तो इसका मतलब क्या है, ये ऐसा मैच द फॉलोइंग जैसा हुआ कि ये ABC से लेके यहाँ तक एक ऐसा समझ लो, ये 3 रिकॉर्ड्स का लिंकेज है. मतलब ABC इज लिंक टू नागपुर एंड अमरावती, एंड DEF इट इज लिंक टू भोपाल, इंदौर एंड सेरीवा, राइट, ऐसा वो कनेक्शन है. अब इसी कनेक्शन को इंस्टेड ऑफ कलर्स, right, we can do it in another table. So I will create another table. I will say student address, in which I will have first column as ID, which will be its primary key, right. Next is I will have STUID, which will be student ka ID. Then I will have address ID, which will be address ka ID, right. Let us say मेरे पास एक ऐसा table है. Now this ID would be 1, student ID is 1, and address ID is 1. Then I have ID 2, student ID is again 1, means yeah, again this row belongs to ABC, and address ID will be 2. Then ID is 3, student ID 2, address ID 3. ID is 4, I will try to okay, ID is 4, right, student ID again 2, address ID is 4. Yeah, ID 5, student ID again 2, address ID 4. Now on the basis of this table, I don't know if it is visible to you or not, I will just try to zoom in. Okay, right, now on the basis of this, right, can you identify कौन से student का कौन सा address होगा? Student ID 1 जो है, that is for ABC, and student ID 2 is for DEF. Can we identify this?
On the basis of these IDs, can you identify? Now what is ID? ID is primary key. Primary key मतलब it will uniquely identify that row. तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टूडेंट आईडी जिसका 1 है मतलब ABC, उसका एड्रेस आईडी 1 भी है, यानी उसका एक एड्रेस ये है, और स्टूडेंट आईडी 1 अगेन उसका एक एड्रेस अमरावती वाला भी है, मतलब 2 ये आईडी भी है. ये थोड़ा सा समझ में आया क्या? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि you can have a third table in which what you are trying to do is you are trying to establish relationships between two tables. One is students table and another one is address table. तो ये तीसरा जो एक student address table है, it is nothing but a relationship between student and address table. राइट, ये कौन सी रिलेशनशिप है? इट इज कॉल्ड एज वन टू मेनी रिलेशनशिप. व्हाई वन टू मेनी? बिकॉज वन स्टूडेंट कैन हैव मल्टीपल एड्रेसेस. वन स्टूडेंट कैन हैव मल्टीपल एड्रेसेस. दैट इज द रीजन वी आर कॉलिंग इट एज अ वन टू मेनी रिलेशनशिप. वन टू मेनी रिलेशनशिप. राइट, नाउ let us try to replicate this in our SQL. राइट, ये मैं हटा देता हूँ बाकी सारा. Okay, now what I'll do is I'll create a table students. I'll say create table student. अपना students DB था ना ऑलरेडी एक, students DB1. हाँ, तो ये स्टूडेंट्स अपने पास थे. राइट, अब now what I need to do is I need to create another table which is called as address. Right, it will have two fields, one is city and one is state, and third field would be an ID which will be primary key. So I'll say create table address in which I'll have first key as ID, right, which is of the type integer and it is primary key. Then second field is city, which will be varchar of say 20. Third field is state, which is again varchar of 20. Primary का spelling is wrong. Yes. Right. Next is I'll create another table student address. Right, in which I'll first create ID again int primary key. Right, next is user ID. Now this user ID, it should correspond to, sorry, student ID, not user ID. This student ID, it should correspond to the students table which we already have. यानी ये वाले रो को वो correspond करेगा. Right, so that is what we would have here. Student ID again int. Right, and third would be address ID. Again it will be int. Now ये कॉलम्स वॉलम्स तो बन जाएंगे, लेकिन what is most important thing in this is to establish a relationship. Right, we need to tell MySQL that okay, this student ID, it should correspond to the students table का ID, that is primary key, and address ID, it should correspond to address table का ID field. So what I'll do is I'll say foreign key, in bracket I'll say student ID
जो हमने यहाँ लिया है स्टूडेंट आईडी ये वाला. So I'll say foreign key student ID, it references students table का field ID. Next I would say foreign key address ID, sorry, in brackets, address ID references एड्रेस टेबल का आईडी. राइट नाउ ये चीज़ समझना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. राइट क्या है कि अपने पास एक स्टूडेंट्स टेबल ऑलरेडी है जो हमने बनाया था, एक एड्रेस टेबल हमने बनाया जिसमें आईडी नाम की एक प्राइमरी की है. राइट फिर हमने एक स्टूडेंट एड्रेस नाम का टेबल बनाया जिसमें हमने 3 फील्ड्स रखी, आईडी, स्टूडेंट आईडी और एड्रेस आईडी. राइट अब ये अगर मैं ये फॉरेन की कुछ नहीं दूँ तो क्या होगा, दे विल बी नॉर्मल टेबल्स एंड नॉर्मल फील्ड्स, स्टूडेंट आईडी एंड एड्रेस आईडी. राइट ये कोई कंपल्शन नहीं होगा कि वो स्टूडेंट्स या एड्रेस टेबल के साथ लिंकेज हो उसका. सो व्हाट वुड हैपन इज दैट अ स्टूडेंट एड्रेस कैन एग्जिस्ट विदाउट अ स्टूडेंट, ये भी हो सकता है. आई विल कम टू दैट लेटर. अभी के लिए व्हाट विल डू इज, राइट विल क्रिएट दीज टेबल्स. सो आई विल से यूज स्टूडेंट्स db1 and I'll create these 2 tables. है ना, तो एक क्रिएट हो गया ये टेबल्स को. अगर मैं ये स्कीमास को रिफ्रेश करूँगा तो विल बी एबल टू सी 2 tables, one is students, one is student address and one is address. Now I will try to insert some data into address table. How will I do that? I will say insert into address. Right, I can say id comma city comma state and I'll say values. I'll copy this, थोड़े 3-4 addresses, 5 addresses I'll just put in. Okay, now in id I'll give 1 comma city is say ngp and state it say mh. इसमें 2 in city I'll see Bhopal and in state I'll use MP. In 3 in city I'll say Indore and in state I'll say MP. In 4 I'll say Kanpur, right, and this thing is UP. In 5 I'll say Darjeeling, state is West Bengal. ठीक है, ये मैंने एड्रेस टेबल में एंट्री कर दी. ठीक है, तो ये 5 रो इंसर्ट हो गए. एंड व्हाट आई विल डू इज आई विल से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एड्रेस. सो व्हाट आई गेट इज ऑल द 5 एड्रेसेस which I have inserted. Right now नेक्स्ट थिंग इज कि ये जो स्टूडेंट एड्रेस टेबल है, ये स्टूडेंट एड्रेस टेबल में हमें एंट्री करनी है. राइट हमारे पास स्टूडेंट्स जो एक टेबल है, स्टूडेंट्स टेबल में कितने स्टूडेंट्स है, शायद 3-4 स्टूडेंट्स है. 1 2 3 4 स्टूडेंट्स है स्टूडेंट्स टेबल में. तो हर स्टूडेंट को एड्रेस हमने असाइन करना है, या कुछ कुछ स्टूडेंट्स को एड्रेस असाइन करना है. राइट सो हाउ विल आई डू दैट? आई विल से insert into student address. First is ID, second field is student ID, and third field is address ID. And I will say values. I will say 1 comma student ID, let's say 1, and address ID 1. I will copy this. फर्स्ट आई विल रन दिस. राइट तो ये रन हो जाएगा स्टूडेंट एड्रेस
does not exist. स्टूडेंट्स एड्रेस नहीं है, स्टूडेंट एड्रेस है. ओके ओके, तो ये इंसर्ट हो गया. आई कैन डू अ सिलेक्ट स्टार. आई से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट एड्रेस. ये इंसर्ट हो गया. राइट, इफ यू कैन सी देयर इज वन रो विच इज इंसर्टेड. राइट, अब मैंने क्या किया, मैं इसको ये कॉपी करता हूँ एंड आई विल ट्राई टू इंसर्ट फॉर स्टूडेंट हुज आईडी इज 2. आई विल ट्राई टू इंसर्ट एन एड्रेस हुज आईडी इज 2 एंड आई विल क्लिक ऑन रन. ये एरर देना चाहिए. वो बोलता है डुप्लीकेट एंट्री 1. ओके, सो आई विल से 2 2 2. लेट्स सी. तो इसने मुझे एक एरर दिया, कैनॉट ऐड और अपडेट अ चाइल्ड रो, अ फॉरेन की कंस्ट्रेंट फेल्स. राइट, नाउ अ टास्क फॉर यू इज, राइट, अ टास्क फॉर यू इज find out why this statement fails. Right, now I need a logical answer. एक बार आप ये एग्जीक्यूट करोगे, राइट, आई नीड अ लॉजिकल आंसर कि ये क्यों फेल होता होगा. ये 2 2 2 पे क्यों फेल हो रहा है. मेरे स्टूडेंट टेबल में ऐसी एंट्रीज है, यार अदर 2 नाम का कोई स्टूडेंट ही नहीं है, 2 आईडी वाला कोई स्टूडेंट ही नहीं है. फिर भी हमने उसको डालने की कोशिश करी तो वो कुछ तो फेलियर आया. राइट, सो टास्क इज ट्राई टू इंसर्ट अ स्टूडेंट आईडी ऑफ अ स्टूडेंट विच डज नॉट एग्जिस्ट, और ट्राई टू इंसर्ट एन आईडी ऑफ अ स्टूडेंट which does not exist, right, and check what happens. Right, I'll stop the recording.